Assalamu alaikum, everyone. This is me, Faizan Arfat. Thank you very much for taking out time from your busy schedule and being with us in the second episode of the OLA Awareness Week. I know it's a very busy time. हमारे लिए आज का दिन इस वक्त specifically पाकिस्तान न्यूजीलैंड छोड़कर जो कि actually हो रहा है यहाँ पर एक Zoom conversation में मौजूद होना is in itself is in itself something that tells a lot about us that हम लोग एक बहुत ही serious चीज के बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं, something that requires a lot of our attention, at the same time enjoying what is all happening. So all the hopes, all the prayers, and all the good lucks for the Pakistani team playing out there. But with that, let's begin with the program. It's not supposed to be long, so all those watching with us, it's just a 45-minute show apparently that we would request you to maybe take out time if possible, and then अगर आप juggle कर सकते हैं, balance कर सकते हैं तो करके हमारे साथ जरूर शामिल रहिए यहाँ पे. A very quick introduction. हमने कल बात की थी that we have initiated an OLA Learning Week and OLA Awareness Week this entire week that's going across. Yesterday we had an amazing conversation on breast cancer awareness. We had some amazing panelists talking about it. जिस तरह से they were taking things forward, जो टेक्निकल चीजें थी, जो नॉन टेक्निकल चीजें थी, वो सब हमने किया. उसी तरह की एक चीज हम आपके लिए आज लेकर आए हैं with 3 amazing women across. I feel like I am adding more diversity to this entire conversation, being the moderator of it. But this is really amazing having all these people with us. इनके बारे में जब मैं आपको quick बताऊंगा, again as I said yesterday, the people that we have lined up for you, इनकी profiles खोलें तो घंटा डेढ़ घंटा तो खाली इनकी profiles में बात करने में लग जाएगा. तो इनकी जब सुनने जाएंगे तो it needs a lot of time, but we won't waste on it. So I'll just open up the subject matter, introduce each one of them, and then we'll take on the conversation. So the subject that we have today is mental health awareness. This subject needs no more introduction. It is these days only. जब हमारे लिए ये subject या ये topic है या ये theme है, ये बहुत ज़्यादा एक common word हो चुका है. अब हम लोगों ने समझना शुरू ज़रूर कर दिया है. हमारे लिए mental health अब शायद उतना बड़ा taboo नहीं है जितना शायद आज से 4 साल पहले या आज से 6 साल पहले था. We have organizations like the Scheme being developed that are readily available for people for their mental health. So इस तरह की जितनी opportunities हैं, इस तरह के जितने लोग हैं, लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया है. इदारों के अंदर अब grievances departments बनना शुरू हो गए. अब वो सारी चीजें seriously लेने जाने लगी हैं जो कि शायद पहले कभी consider भी नहीं की जाती थी. So that is something that is very positive as an achievement that what we have seen across over the years, but there's still something that needs to be talked about. बहुत कुछ अभी भी है जो शायद हम कर तो रहे हैं and is in the right direction. So शायद आज हमारी जो conversation होगी उसकी approach problem approach नहीं है कि यार हम बात नहीं करते. उसकी approach developmental approach है और उसकी approach proactive learning approach है कि ठीक है, बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं हम लोग, बस ट्रैक लूज आउट नहीं करना. बिकॉज एज अ नेशन हमारी आदत है कि हम बहुत अच्छा चलने लगते हैं, फिर एकदम से ना ऑफ ट्रैक हो जाते हैं. बहुत सही चीजें हो रही होती हैं, एकदम से ना आउट, एक विकेट गिरते ही सारे ना ठक 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 नीचे वाले सारे डाउन. सो उन चीजों को समझते हुए हमने आगे की अपनी कॉन्वर्जेशन को, आगे के अपने थीम से रिलेटेड अपनी एक्सेप्टेंस को किस तरह से सही रखना है, सही ट्रैक पे रखना है और इसको नॉर्मलाइज करना है, इसके ऊपर हमारी पूरी कॉन्वर्जेशन होगी. We have 3 amazing females with us. The first woman that we have around us is Ma'am Anusha Somani. She is somebody who has been working with me. मेरी ex तो नहीं बोलेंगे, colleague रह चुकी है. And I'm still learning from her. She's been one of my very prominent individuals. इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. I've seen her journey across from a facilitator to this point where she's working with kids. She's the founder of Shoulder Pad. बहुत मजेदार इंडिविजुअल है. इनकी बातें आप सुनेंगे आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि यार वाओ यार क्या बात है यार. So that's something that has made me feel it. So I'm just sharing it with you. That's my experience with her, and I hope you get to have a flavor of that in this conversation. The second individual that we have with us is Ma'am Tayyiba Imran. She's a clinical psychologist and she's representing Taskin. She's a wellness कोच ओवर देयर. अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा. मेरे पास तो बहुत बड़ा पर्चा आया था, उसमें से कुछ 2-3 चीजें मैंने निकाली हैं. The third and the last individual who we have with us is Ma'am Sana Liaquat. She's also a clinical psychologist.
बाय प्रोफेशन एंड तस्कीन के साथ एसोसिएटेड है और आप लोगों के लिए रेडिली अवेलेबल है. सो आप जब सोचते हैं यार क्या करूं, किससे बात करूं, किसको फोन करूं, तो ये वो लोग हैं कि जो आपके लिए रेडिली अवेलेबल हैं और आपकी सुनने के लिए तैयार है. एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नीड टू बी गाइडेड और डायरेक्टेड, तो वो आपके लिए अवेलेबल है. इनके पास सारे हल नहीं है, लेकिन हल के लिए कुछ अगर करना है तो शायद वो सोच आपको डायरेक्ट की जा सकती है. सो आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम. आई एम जस्ट ओपनिंग अप दिस कॉन्वर्सेशन विद अ वेरी वेरी simple, basic, yet a complicated question. And I'll rather start with Anusha, because Anusha, you've been working across the board with a lot of youngsters in Pakistan, and you also have an exposure of working with people abroad. तो क्या हम लोग उस लाइन पर आ चुके हैं कि अब हम कहें कि नहीं यार, अब हम बिल्कुल सही है, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हो गई है, अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, अब किसी और चीज के ऊपर जाना चाहिए, या अभी भी हमें अवेयरनेस पर ही पहले बहुत ज्यादा काम करना है, बाद में बाकी सारी चीजों की तरफ जाना होगा? First of all, thank you for having me and thank you for such a great introduction. फैजान ने जितनी चीजें बोली, it was a bit too vexed. I would bit slow it down कि इतना भी नहीं है, but Faizan is a very nice individual in general. So thanks Faizan and team for having me here today. In terms of your question, so it's a bit different question because awareness, mental health, I consider mental health as a lifelong journey. ऐसी नहीं है कि आज हो गया फिर कल छोड़ दो, नहीं आज जरूरत नहीं है, अचीव हो गया, कोई गोल नहीं है. It's a lifelong well-being. It's a way of how we live. It's a state of well-being. So it's a lifelong journey. जहां तक पाकिस्तान और comparison की बात है, of course, comparing Pakistan to Pakistan itself, we've come a long way. I think we have to give it for that. But मेंटल हेल्थ इज समथिंग जो कि हर बहुत सारी जगहों पे स्टिग्मेटाइज्ड है. मतलब स्टिग्मेटाइज इन द सेंस कि वहां पे बात नहीं की जाती. बोला जाता है नमाज पढ़ लो, या ना ये कर लो, वो कर लो. लाइक ये इट डजंट एग्जिस्ट. व्हाट वी कैन नॉट सी डजंट एग्जिस्ट. क्योंकि फिजिकल हेल्थ से हम बोलते हैं हाँ दिख तो जाता है ना, वूंड दिख जाता है, पता चलता है डॉक्टर के पास जाना है, ये दिखता नहीं है. सो व्हाट डजंट एग्जिस्ट वी सी इट्स नॉट रियल. But it's something in a nutshell that it's a lifelong thing. Regardless हम पाकिस्तान में हो, US में हो, Tanzania में हो, कहीं पे भी हो, it is something that needs to be worked on every single day. So I wouldn't say a complete journey हो गई है. There's still a long way to go for sure. Right. Thank you very much, Anusha. I'll move this question to Ma'am Sana with just a bit of transition to it. Ma'am, you've been working in Taskeen for quite a long time, apparently. So, मुझे जरा ये बताएं, like when you just, and you entered into Taskeen, that's that day, and now the day today जो आप शायद अपना गुजार कर वापस आई हैं. How do you see the transition in terms of the acceptance of this subject across? Okay. First of all, thank you so much, Faizan, for inviting us and for representing Taskeen, because it means a lot. And thank you so much for such a nice introduction. So let's coming back to your question. So yeah, क्या होता है कि because अभी भी बहुत ज़्यादा awareness की ज़रूरत है, because I have been working since a long time at Taskeen, और उस टाइम पे भी उस टाइम के कंपैरिजन से और आज के कंपैरिजन में से we can see the change, because अभी हमें लोग बहुत इंटीरियर से भी कांटेक्ट करते हैं. लाइक इंटीरियर से हमें कांटेक्ट करते हैं, हमें कोयटा के इंटीरियर से कांटेक्ट करते हैं, हमें केपीके के कुछ इंटीरियर इलाके जिस तरह सवात हो गया, सवाबी हो गया, और डिफरेंट एरियाज से अब हमें वो लोग कांटेक्ट करते हैं. लेकिन पहले क्या होता था कि ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन कराची की हो गई, इस्लामाबाद की हो गई, लाहौर की हो गई, इस तरह से पॉपुलेशन हो गई. लेकिन अभी स्प्रेड हो रही है, बट स्टिल बिकॉज हम जब अभी भी फीडबैक भी लेते हैं जितने लोगों से, तो दे आर मोर फोकसिंग ऑन के अभी भी मेन एरियाज में मजीद ज़रूरत है. बिकॉज और इवन दो नाउ वी हैव स्टार्टेड इट awareness through other multiple platforms. पहले क्या होता था, we were like more focusing on Facebook, Instagram, और उसमें क्या होता था कि हमारी जो educated population थी वो contact करती थी. लेकिन now when people see in TV, see in YouTube और shows वगैरह में देखते हैं, so they do contact us. So in a way we are on the right track, but still we need to work on this thing. Because still काफी लोगों को जरूरत है इस चीज की. Perfect. Thank you very much.
I'll come with a very different question towards you, ma'am Teba. And so my question is that, when we talk about mental health, you just mentioned ke aap logo ke paas in Taskeen with very specific, you're getting calls from the interiors too. So मेरा आपसे सवाल ये है कि what is the level of openness towards the people of interior? क्या level है उनका? And thank you for inviting us, Fazan. Okay. So as for your question, Fazan, like you said, the interior awareness की जब हम बात करें तो definitely we could create rising क्योंकि हर जगह से इस वक्त क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कराची से कॉल आती है किसी बड़े शहर से पूरे पाकिस्तान के हर जगह से ही ऑलमोस्ट में कॉल होती है। तो अब बात ये आ जाती है कितनी ओपननेस है। तो डेफिनेटली जब कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो दे डू हैव सम अवेयरनेस। ऑल्सो ये कह सकते कि इन तरीके से हमको अवेयरनेस है क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है, जैसे सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन ये है कि उनको इतना अंदाजा होता है कि ओके दिस इज समथिंग मोर देन कोई ना कोई रीजन है जिसको हमें डिफरेंट तरीके से हेल्प आउट करना है और उसके लिए हमें किसी प्रोफेशनल को रीच आउट करना है क्योंकि इसमें स्पेशलाइज है। तो इनके अंदर इसी अवेयरनेस को होती है और ओपननेस बिल्कुल डेफिनेटली जब कोई आगे से बढ़कर से अप्रोच कर रहा है तो ओपननेस तो वहाँ होती चीज है। हाँ वो हमें गाइड करना पड़ता है, ठीक है, गाइड इन द सेंस कि हमें वहीं से पूछना पड़ता है कि कब आके एक यू हैव टू गाइड द होल फैमिली अच्छा वो पॉइंट पे आ सकें जहाँ पे वो भी अपने इस इशू को अच्छे से समझ सकें और उसके लिए सोल्यूशन कर सकें। That's amazing. It's really nice to hear such insights and such level of acceptance coming in from such people. Thank you very much for this input. Now Anusha, I'd like to come and ask you a very 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 controversial question. When I say controversial, I mean to say this because it comes up with a lot of context. के यार कैसे कह सकते हो, तुम्हें कैसे पता and all this. But my question is that as humans we all seek attention. And that's something that is one of the basic human needs. That's quite often normal thing. और अब कुछ लोगों को शायद वो अच्छे से मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती, और जिनको नहीं मिलती वो कुछ चीजें ढूंढते रहते हैं. सो मे बी जब तक मेंटल हेल्थ नहीं थी तो वो किसी और रीजन की वजह से किसी और तरीके से अटेंशन सीख किया करते थे. लेकिन जिस तरह से एक सर्टेन चीज को अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है वो उन चीजों को एज टूल्स यूज करते हैं. सो अब मेंटल हेल्थ बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है कि ये एक अटेंशन सीकिंग टूल बन गया. कि मुझे अगर लोगों की अटेंशन चाहिए ना, मैं चाहता हूँ यार जरा लोग मुझे जरा बात करें, मेरी तरफ सारे मुझे मैसेज करते रहे अल्लाह खैर, तो मैं बस बना लूंगा कि यार मुझे XYZ चीजें हो रही हैं. सो हाउ रियल इज दिस बी इस चीज को, बिकॉज यू माइट वुड हैव फेस्ड सम ऑफ सच कंसर्न्स, तो इसको पता कैसे चलेगा? लाइक हाउ वुड यू एज अनुषा नो दैट फैजान अटेंशन सीख करने के लिए कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, आई एम सो सॉरी, क्या करूं, या फैजान को वाकई ये क्लिनिकली डायग्नोस्ड चीज है? So I was like, when you said controversial, I was like, as long as you don't ask me politics related, petrol rate, dollar rate, I am okay with it. I say controversial because इस पे भी सवाल आएगा कि यार क्यों, ये क्या सवाल करने में, but I really want to know कि इसमें ना बड़ा एक fine line है, and I would want to do it in the beginning only so we can dive in directly. Yeah, sure. So दो चीजें, एक तो ये कि कोई इंसान, when you say attention, I would also say like at some point people need validation for what they're going through. Now that comes in different ways. अगर उसको कहीं से attention वो नहीं मिल रहा, there is an underlying need that is not being fulfilled at some point, say consciously, unconsciously, subconsciously. There's something that's not being met, and hence they're finding different ways to seek that source. That could be harmful potentially for them, but then there is an underlying human need, as you mentioned, to seek for validation of your own emotions. बहुत ज्यादा होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे जो ग्रोइंग एज में, टीनेज ईयर्स में, जिनको नहीं माँ बाप से अटेंशन मिली होती है, दे ग्रो अप to be somebody who would rebel or would want to seek attention of their parents by overachieving. They were like, कब मुझे अपने माँ बाप की acceptance मिलेगी? They would want to do more of it. So there is a different, there's an underlying human need that I would mention here. So once a person works with a mental health professional, they create, like, there's an awareness through partnership that's created.
for the person, and that's going to be, that's बोलते ना जब कोई अल्लाह ताला कोई awareness दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, because that is very important. Number two, एक Carl Jung है, he's a prominent person in psychotherapy, I guess, if I'm not stating it wrong. He talked about the concept of perception is projection, which means that whatever you are sending outside, however you're perceiving the world outside, it means it exists within you. You are projecting your own beliefs, your own values onto somebody else. So before we talk about your person sahi nahi hai, galat bol raha hai, sahi bol raha hai, ask your own self, what is that perception that I'm holding for the world or for that person out there? And we want to lower the threshold. Of course, perception rehta hai. We're human beings. I wouldn't say like, oh, 0% pe chala jayega. But just be mindful. Be aware of your own projections onto the world. So I would say two things. There's always an underlying need that they're looking out for. Number two, and we just have to recognize it and work with them on it. The second is perceptions project. Be mindful of how we are perceiving, and have that reality check for our own selves is important. It's a long answer to your question, your controversial question. Thank you very much. It kind of explains it to me. It's something that can be understood, and that's how I would like to bring this question to Ma'am Tayyib right now, because she's working as a professional. मुझे ये बताएं मैम कि जिस तरह से she said that working with a mental health professional, I can get to know if it is me seeking validation, if it is me seeking attention, or if it is me actually struggling from some sort of mental challenge. So yeah, as a professional, is it like possible? Are you guys doing it? And do people come in and you find them they're not actually going through some sort of a mental health challenge, but it is something that is connected to their basic need maybe, and वो उस तरह से है, अगर वो connect हो जाएगी तो मसला हल हो जाएगा. Is it such of an experience with you? Definitely. Look, when some of those people, हम हर तरह के लोगों को देखते हैं, ठीक है. उसमें वो लोग भी होते हैं जो misguided होते हैं regarding mental health, ठीक है, या misguided about the symptoms of different disorders. जब फर्क आ जाता है कि डिसऑर्डर होने में एंड देन उसके सिम्टम्स होने में भी बहुत फर्क होता है, तो वहाँ पे उनको गाइड करना डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल हमारा काम है, ठीक है. और फिर जहाँ बात आ जाती है असेसमेंट की, डेफिनेटली हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम पहले असेस करें कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कहाँ पे इसकी रूट कॉज है, ठीक है, और फिर उसके बाद वी कम टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ठीक है. तो वहाँ पे ये चीज़ हम असेस कर चुके होते हैं कि अब ओके कि अगर ये जो हमें प्रॉब्लम बता रहे हैं और इसकी जो भी रीजन हैं या क्या रूट कॉज है, उनकी हिस्ट्री क्या कहती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल गेट टू नो कि ये सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग हो रही है. नॉट एग्जैक्टली आई वोंट से अटेंशन सीकिंग, क्योंकि हर एक को एक अंडरलाइन, जैसे कि अनुषा ने कहा कि एक उनकी नीड होती है, ठीक है, टू गेट वैलिडेशन, टू गेट रिकग्निशन, रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए कि हाँ वी आर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम. और ये चीज़ जो कि होती है, हम इसको एक कॉल फॉर हेल्प कह सकते हैं, ठीक है. अब what that leads to, that's another story. कि वो किसी डिसऑर्डर को लीड कर रही है, किसी लाइफ क्राइसिस को लीड कर रही है, ये जस्ट अ फेज, ठीक है. तो अब रीजन कुछ भी होगा, दैट फैक्ट इज कि वो किसी एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे लिए अटेंशन सीकिंग या दूसरों के लिए अटेंशन सीकिंग, बट दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर देम. सो अब हम उनको कैसे हेल्प आउट करें, वो डेफिनेटली हमारा काम है कि हम कैसे उनको उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं और उस प्रोसेस से लेके गुजरते हैं जहाँ पे वो भी इस चीज़ को रियलाइज करें कि उनकी क्या नीड्स हैं और वो कैसे उनको फुलफिल कर सकते हैं. I think I'm gonna add to what Taiba just said. I think she said very beautifully about call for help. It's usually a cry for help or call for help, in general, that a person is, because हमारे लिए शायद वो problem now, but for them it would be like a major problem that they're not able to get through. So validation also means que we validating our own problems. Sometimes that's what I'm going to talk about a bit later as well, on toxic positivity. Like we say like kuch nahi hai, everything acha hai, yeah, all of it. And what we do is we shun away that the cry for help, and we're like, no, you're just seeking attention.
out there. But for them, even a minor, हमारे लिए बहुत minor होगी. Like you might get over it in 10 minutes. But for them, they are in that situation, and for them, it might be something that they're not able to get over. So I just wanted to add. That's very amazing, Anusha. I'd just like to add my perspective. I was having a conversation apparently lately with a couple of people. You know, a lot of people going through a lot of challenges, and you know that's what I've been saying. This कि शायद मेरे लिए एग्जाम में फेल होना इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू अपने इलाके की क्रिकेट टीम में ना सिलेक्ट होना है, और किसी के लिए शायद अपने इलाके की क्रिकेट टीम में ना सिलेक्ट होना इतना बड़ा इशू नहीं है जितना एग्जाम में फेल होना है. So you can never, you know, maybe judge or evaluate or whatever the word you want to use for anybody in particular. आपके लिए एक certain set of structures है, वो इसीलिए तो कहा जाता है ना कि आपको जितना बोझ दिया जा रहा है वो आपकी ताकत के हिसाब से. अब आप उसको दूसरे से कंपेयर करने जाएंगे, यार उसका तो कुछ नहीं है, आपको क्या पता उसकी ताकत की लिमिट कितनी थी. So that's something that we need to, you know, understand on a human level, and then empathize and then move forward. So I would want to come up with a very different question, ma'am, directing it towards ma'am Sana, and that is, you know, हम बहुत सारी चीजों पे conversation कर रहे हैं, you know, इसकी acceptance जरूरी है, ये करना जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन हम जब एक particularly because working in the corporate sector, I've been getting into a lot of corporate exposure, जब हम वहां जाते हैं ना तो वहां पर हम bottom line की बात करते हैं कि at the end of the day पैसा कितना उतर रहा है. ठीक है, उसके लिए हमें जो लोग चाहिए ना, वो चाहिए कि भाई वो जरा लगातार काम करते रहे. हमारा सेल्समैन का, हमारा जो सेल्समैन है या जो सेल्स टीम का बंदा है ना, वो फ्लोर पे रहे, वो ग्राउंड में रहे, वो फील्ड पे रहे, वो काम करता रहे, उसको कोई मेजर इशू नहीं होना चाहिए या वो नहीं हो सकता. So उस तरह के केसेस के अंदर apparently would be dealing with a lot of middle aged men and middle aged women, a lot of working men and women. How do you you know, connect with them? How do you make them understand and embrace that it is something that can, you know, be hitting towards them, and they should also maybe take time out of it for themselves and consider this as one problem? Okay, very interesting question, because it happens a lot, and burnout people do experience, and इस तरह के corporate sector में, or they are just working day and night, they are not giving time to themselves. So it's really hard, because being human, we do get tired, or we feel like exhausted, and उसमें फिर हमें नहीं समझ, हमारे फिर मूड जो है वो सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, हमें चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, हमारा किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, हम फिर थोड़ा सा भी स्पेस मिले, वी वांट टू बी अलोन, और फिर उससे बीइंग अलोन से हमारा क्या होता है, सोशल सर्कल डिस्कनेक्ट हो जाता है, और सोशल सर्कल जब हमारा डिस्कनेक्ट होता है तो मजीद वी डू गो टुवर्ड्स लोनलीनेस. तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, और फिर व्हेन डू वी सी सच क्लाइंट्स, और इस तरह के जब लोग हमारे पास, बिकॉज लाइफ गोज ऑन नो मैटर व्हाट, आपको लाइफ है, लाइफ में एक प्रोसेस है, इसमें आपको एक डेली रूटीन प्रैक्टिस करनी है, जरूर करनी है, बट स्टिल वी डू हैव टू कीप बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, के हमें अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस लेके आना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी लेके आना है. वी जस्ट कांट कनेक्ट टू वन थिंग ओनली, बिकॉज इट्स लाइफ में हमें सब चीजों को लेके चलना है एक साथ. और इवन दो हमें अपनी, कई लोग होते हैं दे डू से, बिकॉज वी बीइंग पाकिस्तानी वी आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट, या तो हमने बहुत ऊपर हाई लेवल पे जाना है, बहुत पोटेंशियल होना है, या फिर हमने बिल्कुल काम नहीं करना, हम ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो ग्रे एरिया मोस्ट ऑफ द टाइम. तो वी डू हैव टू टेल देम कि प्लीज देयर इज आल्सो ग्रे एरिया, हमें बहुत पीक पे नहीं रहना, और हमें सब चीजों को इक्वली प्रैक्टिस करना है. सो या इन अ वे वी डू गाइड देम. Perfect. Thank you very much. I'll again ask you a follow-up question to you only, and because apparently your profile says that you've been working on anger management and relationship issues too. So हमारे यहाँ ना just one question, because your profile actually speaks for it. हमारे यहाँ mental health में ना शायद हम लोग anger को mental issue नहीं समझते कि यार मतलब anger ये तो ये बंदा तेज है, इसका गुस्सा तेज है, ये जरा मिजाजन थोड़ा ना सख्त है, ये इसकी वजह से. So ये किस तरह से हमारे साथ कनेक्ट होता है, यू नो, ऑन द मेंटल हेल्थ फ्रंट, एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल्स लाइफ ऑल टुगेदर? Yes, it impacts a lot,
बिकॉज क्या होता है, उस चीज को बहुत कैजुअल लिया जा रहा होता है कि हाँ ये शख्स तो है ही ऐसा, और फिर वो शख्स, उस शख्स को भी बाद में दे डू फील रिग्रेट, इवन अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट डू से कि वो तो हमारा फॉर टाइमिंग होता है कि हमने 5 मिनट्स एक्सप्रेस कर दिया, इवन दो 5 मिनट्स भी नहीं होते, 2 to 3 मिनट्स का हमारा वो गुस्सा होता है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सो इट्स रियली हार्ड फॉर देम, और उनको वो बहुत रिग्रेट होता है। तो वी डू एनालिसिस के नहीं, सी उस टाइम पे क्या होता है कि आपको फॉर टाइमिंग होता है वो एंगर, और बिल्कुल इस तरह से। और समटाइम्स क्या होता है कि लोग उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, तो उनको फील होता है कि ओके इनको तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो मैं मजीद गुस्सा करूंगा। तो ये चीज उनकी फिर फर्दर री इन्फोर्स हो रही होती है। तो वी नीड टू ब्रेक दैट साइकिल के ओके, अगर आपको लगता है कि लोग आपको उस तरह से परसीव नहीं कर रहे, आपका वो एंगर लेवल वो अंडरस्टैंडेबल उनको लिए नहीं है, तो व्हाट इफ वी कैन चेंज आवर टेक्निक्स, व्हाट इफ वी कैन, बिकॉज एंगर में कुछ नहीं होता, आपकी अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। आपको खुद अपनी नेगेटिव एनर्जी आप इम्पोज कर रहे होते हो बॉडी में, आपको खुद नेगेटिविटी हो रही होती है, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस कौन फेस करता है, आप ही फेस करते हैं। तो फिर इट्स सॉर्ट ऑफ रियलिटी चेक कि अगर हम इस सिचुएशन में रादर देन बीइंग एंग्री, और अगर हम कुछ और कर लें, कुछ प्रोडक्टिव या कुछ और इस तरह से खुद को सेफ साइड पे रखने के लिए, तो हाउ इट वुड बी। सो दे डू कनेक्ट के ओके इस तरह से अगर हम बहुत ज्यादा एंग्री होंगे और बहुत वो करेंगे, तो इट्स और लॉस ओनली, नॉट फॉर अदर्स। और फिर वो उनकी डेली लाइफ में ये भी हो रहा है। फिर इवन दो पीपल डू, इवन दो माई क्लाइंट आस्क्ड मी, टोल्ड मी के ओके इस बार आई डिडंट शो एंगर, सो पीपल वर कमिंग एंड आस्किंग मी ओके एवरीथिंग इज ओके, सब चाहिए, आपने वो आपका मूड वो नहीं था, तो आर यू ओके। तो यू नो फिर इट्स सरप्राइजिंग फॉर अदर्स। सही है। सो आई एम रियली सॉरी अनुशंत, ये बार मेरा एक छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन है, ये मेरा जाती सवाल है, बिकॉज यू मेंशन दिस ओवर हियर ओनली, कि हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो जरा डाइवर्ट कर लें अटेंशन को और किसी और तरफ डायरेक्ट कर लें। मेरा ये सवाल बहुत पर्सनल है कि ये मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल फॉर मी, कि मतलब मुझे एक चीज से गुस्सा आ रहा है, मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं उसको सुनाऊं, मैं उसको कैसे नहीं सुनाऊं, मतलब मैं अगर कहीं और जाऊंगा तो मतलब मैं तो रखूंगा ना उसको अंदर के, अभी रुक थोड़े देर बाद आके सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा सही, क्योंकि जब तक सुना नहीं रहा तब तक तो दिल में तसल्ली नहीं हो रही। सो मैं अपने अंदर वो कैसे कंटेंटमेंट डेवलप कर रहा हूं कि बेशक आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, बेशक आई एम नॉट शोइंग माई एंगर एंड लूजिंग माई टेम्पर, येट आई एम ऑल्सो बीइंग कंटेंट कि ठीक है माफ कर दिया, आगे बढ़े। ओके, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि आप उसको एंगर को चैनलाइज कर सकते हैं। लाइक व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओके, लेकिन आपकी वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो कहते हैं कि मैंने तो नहीं सुनाई ना, मुझे तो अपनी सुनानी है बातें उनको, मुझे तो अपना आप एक्सप्रेस करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्बल या तो रिटन एक्सप्रेशन कि यू कैन राइट अ जर्नल, और उसमें भी क्या होता है कि ओके यू कैन बर्न इट और यू कैन टेयर इट अप, बट स्टिल दे डू फील कि उनको तो हमने नहीं दिया ना, उन लोगों ने तो नहीं पढ़ा वो तब तक, तो हमें क्या सेटिस्फेक्शन होगी। स्टिल इट्स आवर ओन एक्सप्रेशन। तो वी डू लाइक के ओके आप किसी अपने इस तरह के ट्रस्ट वर्दी पर्सन को अगर आपको वर्बलाइज ही करना है, तो यू कैन सेंड देम वॉइस नोट्स कि इस शख्स ने इस तरह किया है, आपको ये कहना चाहता था। एटलीस्ट क्या होगा, आपकी अपनी एक जो नीड है, नीड ऑफ एक्सप्रेशन, वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो इट्स सॉर्ट ऑफ वे कि आप वर्बल एक्सप्रेशन कर लें, या आप रिटन एक्सप्रेशन कर लें, या आप स्क्रिबलिंग कर लें, या आप इस तरह से मल्टीपल इंटरवेंशंस हैं जो हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास और भी कुछ है, लेकिन मैं आपके पास थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ, फिर आपको मैं पूछता हूँ, because you mentioned a couple of things. I would just take up anger only and go to Anusha directly. Anusha, मुझे ये बताएं, हम बच्चों में भी ना बहुत ज्यादा ये नोटिस करते हैं, and especially the kids today, the generation Z जिसको हम कहते हैं, that you're primarily working with, we say that they are also losing temper more earlier than हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे ज्यादा। मतलब जितना जल्दी हमारी फुप्पो कहते हैं ना आड़ डालने में नहीं जाती, उतना जल्दी हमारा आज का बच्चा चले जाता है, अगर उसका दिमाग थोड़ा सा भी उस चीज पे ना चले जिस चीज पे वो चलाना चाहता है। हाउ डैमेजिंग डू यू सी this particular thing towards the future leaders, I would say, because they are supposed to, you know, live in this world, lead, and then grow further. How damaging do you feel it is? And B, if it is a lot of damaging, then what can be done to compose it?
So I would connect this question with the last question that you had follow up with, Sana, and that's primarily on, okay, at the end of the day, who is driving your bus, right? Or whose music are you playing in your mind? आपको गुस्सा आ रहा है या किसी को भी गुस्सा आ रहा है, you've given the remote control of your life to somebody else. एंड बी लाइक मैं तो गुस्सा करूंगा ही चाहे 10 मिनट के बाद भी, लेकिन I'm going to spend the 15 minutes of my life on for this person, and that's okay. People are valuable and they do deserve that attention, but then positive attention, right? Why don't they deserve your care or love, right? So in terms of anger, I would say I just have like who's driving your bus. Have you given what do we do is like sometimes most of the times what we do is like हमने remote जो steering wheel है, we've given it to somebody else, mama, chacha, mother, father, like, and I'm talking about the real time clients scenario here as well, and they've gotten to the back seat and be like देखें ये करते हैं, देखें ये करते हैं, right? And I would connect it with what we at School of Leadership we talk about, the TPR, right? Take personal responsibility. Are you taking personal responsibility for your emotions, or are you going to place it on somebody else? Like, इसने trigger किया मुझे. Because that's a common statement that I have come across many times. So whenever we place the blame onto somebody else, that we say in NLP is being at effect, right? What would be the other side? Being at cause. It's like, what can I do about it? In terms of the danger, yeah, उस sense में, of course, anger, like Generation Z, as per the research, I think pandemic के बाद, American Psychological Society says कि 7 out of 10 Gen Z, which is apparently the age between 9 to 24 years of age. So yeah, they've reported that 7 out of 10 Gen Z are reporting mental health issue. And what they've noticed is that in case anxiety, because uncertainties around the world, that has increased. Like they don't know कि school कौन सा जाना है, grad school कौन सा जाना है, job मिलेगी कि नहीं मिलेगी graduation के बाद. I graduated in an extreme pandemic phase, so I can totally relate with it, right? And there are major uncertainties in the world around. So वो stress level बढ़ रहा है. And then what happens is that they have no, I wouldn't say no, but little ways of channelizing it. What we would see is that once they are being angry, they would pick up their phone, start scrolling on social media, just to suppress it, just to divert their attention, and that's not channelizing. ये अच्छे वाले बच्चे लग रहे हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया देख रहे हैं, हमारे वाले तोड़ देते हैं चीज. और भी चीजें होती हैं. There are a lot of people who seek validation through substance abuse, and that's one thing that we've come across very much. ये जो अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, so that's, of course, it goes without saying, okay, it is dangerous. But then seeking support and knowing that, hey, you know what, I may require some professional help. Can I talk to somebody? The support space. That's where Gen Z support space, so the Facebook community group that has been created, so that people, all these Gen Zs, can talk about what they're going through and they can seek for support, rather than being in that state and be like, yaar hame to koi samajh nahi raha. Perfect. I'm not sure if I answered really your question, but I really get that हमें ना एक again the answer that I could extract out of this conversation was that yes, it is dangerous. Yes, the challenges are there, and the only way is to channelize it, right? You don't have to stop something, because stopping also creates a lot of mess. You need to just channelize it and throw it out. जहर को अंदर नहीं रखना, निकालना है, लेकिन अच्छे अंदाज से निकालना है, गलत अंदाज से निकालना. I think I'll give you a metaphor. It's like carrying a sade हुए अंडे with you, right? You break अंडे and you carry it with you. First day, but of course आना start हो जाएगी, and then you'll be like, यार बदबू आ रही है, but then you'll get so immune to it and like, nah, it's fine. But now it will start affecting other people around you. They will notice it. But you're like, because we've gotten so used to of the pain. That's also one of the things. We get so used to of the pain that we're like, what do we do without it? इसके अलावा हमारी आइडेंटिटी क्या है?
because that's helping us to go somewhere, and that's what we call secondary gain and all of those things. But of course, working on it, not suppressing it, channelizing it would really help. Perfect. Thank you very much, Anusha. I'll come with a question to you, ma'am Tayyiba, because she just mentioned substance abuse as one form of maybe channelizing it, right or wrong. That's that's quite subjective in terms के जो कर रहा होता है उसको गलत कभी नहीं लगता, जो नहीं कर रहा होता वो हमेशा बोलता रहता है कि गलत है. But then again, because you do a lot of psychotherapy too, if I'm not wrong, how do you see an individual going in towards substance abuse, be it as apparently smoking भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपका I just am very openly saying this though, but हमारे यहाँ कबीर सिंह लोग बड़ा famous है कि that if you have been going through a breakup, आप सिगरेट नहीं पी रहे, आप ड्रिंक नहीं कर रहे, आप कुछ और लेवल पे सब्सटेंस अब्यूज नहीं कर रहे, तो आपने उस चीज को फील ही नहीं किया. हमारे यहाँ उस फीलिंग को फील करने के लिए कहा जा रहा है कि ये चीज करनी चाहिए. So A, how do you, like, what is your comment on it? What would you say towards this kind of an approach? B, how do you feel that solutions like maybe psychotherapy, solutions like hypnotic treatments are towards these particular challenges? Okay, so as you said कि होता क्या है कि हमारे यहाँ लोगों को आदत है कि उनको क्विक सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है. If they are feeling bad, so they won't give it a thought. क्यों ऐसा फील हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है. अगर ब्रेकअप हुआ है फॉर एग्जांपल, तो क्या हो सकता है, क्या रीजन है, ठीक है, अब हो गया, अब आगे क्या करना है. बजाय इसके कि वो सारे जो है प्रोसेस से गुजरे, वो डायरेक्ट जाते हैं कि कोई किसी क्विक सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है. तो आई एम जस्ट बिकॉज इससे रिलेट कर रही हूँ मैं, तो या सब्सटेंस है क्या, दे विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे बात आ जाती है जो हम कॉपिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो क्या एक हेल्दी वे ऑफ कॉपिंग है और एक अनहेल्दी वे ऑफ कॉपिंग. हेल्दी वे क्या होगा कि भाई अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाएं, बुराई करें, खूब जब तक दिल ना भर जाए तब तक बताते रहे उनको कि भाई क्या हुआ है उनके साथ, ठीक है. द अदर वे इज अनहेल्दी कॉपिंग, ठीक है, कि उसमें क्या है, सब्सटेंस की तरफ चलेगा, ठीक है, उससे रिलीफ मिल रहा है, उससे फॉर अ फ्यू सेकंड्स का जो ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है उनको, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके, ठीक है. कॉन्सिक्वेंसेस पे आ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली दे वुड नो कि अच्छा हमें रिफ्रेन करना है इस चीज से, ठीक है. थोड़ा सा पेन से हम गुजर सकते हैं, तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं, उससे गुजरते हैं, उस प्रोसेस को करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए दे गो टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशंस हैं. अब जो जैसे आपने कहा अभी अपनी एग्जांपल दी एक मूवी की, होता क्या है कि हमारे यहाँ मूवीज के थ्रू या सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पे क्या इन चीजों को बहुत ज्यादा एक आई वुड से रोमांटिसाइज कर दिया गया, या ये लोग उन लुक्स को, उन चीजों को आइडियलाइज करने लगे कि अच्छा ये चीजें हमें करनी है, हमें इस तरफ जाना है. बट द थिंग इज अल्टीमेटली वो उनको नुकसान पहुंचा रही है. उनको ये नहीं बताया जा रहा कि ये एक अनहेल्दी वे ऑफ कॉपिंग है, ठीक है, ये आपने नहीं करना है, बल्कि दूसरा जो एक सिनेरियो होता है, जो दूसरा एक तरीका है, जो हेल्दी तरीका है, ठीक है, जिसके थ्रू वो इन सब चीजों से गुजर भी सकते हैं और आखिर में देख गुड टर्म, ठीक है. तो वो चीजें उनको नहीं बताई जा रही. तो आई थिंक देयर इज वेयर वी लैक कि हमें वो चीजें भी सामने, जहाँ अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो डेफिनेटली इट कुड बी अ वे ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस के क्या तरीकेकार हो सकता है, हेल्दी तरीकेकार, हेल्दी वे ऑफ कॉपिंग, जिसके थ्रू हम लोगों को बताएं कि अच्छा प्रॉब्लम्स तो ये हैं, अब उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हम उनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करें, किस तरह से हम उस प्रोसेस से गुजरें. तो हाँ, अगर उस एरिया में हम देखें तो डेफिनेटली हमें अभी भी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स तो लोगों को पता चलना शुरू हो चुकी है कि अच्छा ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम गुजर सकते हैं, लाइफ में कभी भी आ सकते हैं ये सिम्टम्स, लेकिन अब उसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, हमें करना क्या है, वहाँ पे वेयर वी लैक. तो उसमें क्या होगा, हमको जो तरीका नजर आएगा दे विल गो टुवर्ड्स. Thank you very much. It kind of explains this entire idea. And I kind of come up to a good conclusion apparently towards this entire system that we're talking about. And just one question that I had earlier too, and I'll just bring that towards Ma'am Sana, and that is, we were mentioning that there is a lot that we need to understand. There's a lot that we need to pay attention to. There's a lot that we need to be conscious about in our daily lives that tell us a lot about ourselves only. हम बहुत कुछ सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं. जब उसी की तरफ हम लोग अगर कॉन्शियस देखने लग जाएं तो हमें हमारे बारे में या हमारी एक सर्टेन सिस्टम के बारे में वो बहुत कुछ बताता है. सो जिस तरह से यू बीन मेंशनिंग दैट कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से आप उन चीजों को चैनलाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं. माय क्वेश्चन इज कि अगर हम कोई एक सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं,
क्या उससे इस तरह की चीज सिग्नल होती है कि ये इंडिविजुअल किसी सर्टेन चैलेंज से गुजर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की आदत होती है बस ऐसे ही ना बैठे बैठे पेन चलाने की। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनसे बैठा नहीं जाता, XYZ रीजन कुड बी द कॉज अपेरेंटली, बस उनसे बैठा नहीं जाता। कुछ लोग पेन चला रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं बस। सो व्हेन यू सी सच काइंड ऑफ अ बिहेवियर, हाउ डू यू एनालाइज इट एंड व्हाट इज द टेक आउट ऑफ सच बिहेवियर्स? Yeah, very thoughtful question. Yes. Okay. So as I mentioned previously, कि क्या होता है, हम कई चीजें अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम होता। इवन तो हम अपना अगर गुस्सा भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एंगर इज सरफेस लेवल इमोशन, देयर इज सम मीनिंग अटैच टू इट। सही है, तो कुछ ना कुछ इसका मीनिंग अटैच्ड होता है जिस चीज पे हमें, जो हमें ट्रिगर कर रहा होता है बेसिकली, और जिससे हमें गुस्सा आ रहा होता है। तो गुस्सा इज वन इमोशन जो सरफेस लेवल पे है, जिसके थ्रू हम अपना अपने, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई इनसिक्योरिटी है या मेरी सेल्फ स्टीम लो है या मेरे कुछ है, तो उसको मैं गुस्से के थ्रू कवर अप करने की कोशिश करूंगी, उसको मैं इस तरह से मास्क के थ्रू वो करूंगी, पोर्ट्रेट करूंगी। सो दैट्स वन इमोशन। देन अनदर, और फॉर एग्जाम्पल एज यू मेंशन कि कोई शख्स है वैसे ही बिला वजह पेन, कुछ लोग होते हैं टिक 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 पेन क्लास में बैठे हुए, यूजुअली बिहेवियर हमें देखने को मिलते हैं। तो somehow that's fine, but if something other than normal, then there is something behind, because क्या होता है मेंटली वो कोई और उनका माइंड चल रहा होता है, इवन दे डोंट नो कि वो कर क्या रहे हैं, कि वो पेन को वो कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा लेग शेक करते हैं, तो वो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई उनके माइंड में चीज चल रही है जो उनको एंजाइटी दे रही है, और वो उस चीज को लेग शेक करने के थ्रू बिहेवियरली पोर्ट्रेट कर रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जो कि नॉर्मल हद तक भी होता है कि किसी शख्स को बहुत ज्यादा हंसने की आदत होती है, कोई शख्स बहुत जल्दी सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी फील कर लेता है कुछ, लेकिन एक नॉर्मल हद तक। कोई भी चीज होगी जो नॉर्मल से हटके होगी, दूसरों के लिए ऑब्जर्वेबल होगी, इट मीन्स देयर इज समथिंग विद देम, और वो कुछ ना कुछ अनदर वे में उस चीज को पोर्ट्रेट कर रहे हैं। तो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट थिंग। और फिर जब डेफिनेटली हम उनके बात करते हैं, कई दफा ऐसे क्लाइंट्स होते हैं हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं, वी डू दैट्स फाइन, इट्स ओके। नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम उस वे में सोच भी नहीं रहे होते, हम उस चीज को उस तरह से एनालाइज भी नहीं कर रहे होते। जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग हम कर रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ रीजन जरूर होती है बिहाइंड दैट। तो वी डोंट प्रेशर देम कि इसी वजह से आप कर रहे हो, और हम उनको खुद कोशिश करते हैं कि आप खुद एक्सप्लोर करें व्हाई यू वर डूइंग दिस। लाइक कई क्लाइंट्स आते हैं, दे यूज्ड टू से कि जिस तरह से हम पहले थे हम वैसे नहीं है। ओके, पहले क्या चीज आप करते थे, तो पहले कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपके लिए इंजॉयबल थी, राइट? तो और फिर आप तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और फिर वो उनके लिए बिलीवेबल भी होती है, वो उस चीज पे खुद भी बिलीव करते हैं, ओ ओके वी वर डूइंग दैट्स व्हाई दिस थिंग। तो फिर उनके लिए वो एक आहा मोमेंट होता है कि ओके वी गॉट आवरसेल्फ, वी डू नो आवरसेल्फ कि दैट वाज द थिंग। सो हम उसमें सिर्फ एक मिसकंसेप्शन हमारी ये भी है कि वी डू टोटली डिपेंड ऑन थेरेपिस्ट, कि आप बताएं हम क्या करें। अब वो उन्होंने ड्राइविंग सीट जो उनकी किसी और ने ली हुई थी, वो आप थेरेपिस्ट को वहां ड्राइवर बना के बिठाना चाहते हैं, ले जाएं आप हमें जहां ले जाना चाहते हैं, आप बताएं हम क्या करें। वी डोंट डू दिस, वी डू टेल देम कि यू हैव द पोटेंशियल, आपको अपना ज्यादा मालूम है, बिकॉज आपका हमारे साथ 2 सेशन में जस्ट 1 सेशन हुआ है। वी कांट टेल यू, यू नो योरसेल्फ बेस्ट, आप अपने साथ इतने टाइम से रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, बस वी कैन फैसिलिटेट यू, ऑफ कोर्स वी कैन गाइड यू, लेकिन वो चीजें यू हैव टू कम अप विद ऑल दोज थिंग्स। सो इट्स सॉर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, और जब वो सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं तो दे डू गेट देयर ओन आंसर्स। सो इन अ वे दैट्स द टेक आउट। I hope it clarifies your answer. Yes, I get a lot of clarity on that. Thank you very much. मुझे लग रहा है, मुझे बताएं कि ये जो आपसे ये सवाल जो लोग करते हैं कि हम पहले जैसे नहीं है, ये क्लाइंट खुद अपने बारे में करते हैं, ये बेगम है जो अपने शौहर के बारे में बोलती हैं ये सारी चीजें आपको?
नहीं वो खुद अपने बारे में भी करती हैं. Thank you very much. This kind of explains a lot to me, and brings into a lot of input towards this conversation that we had. I'd just like to move on with one question, apparently the last question, and that's for Anusha. Anusha, मुझे एक बात बताएं, हम दो चीजें ना बड़ी ज्यादा करते हैं. मैं वो बोलूंगा तो आपको शायद थोड़ी सी हंसी भी आएगी, लेकिन हम उनको ना बड़ा मतलब नॉर्मल सा समझने लगे. पहली है प्रोक्रेस्टिनेशन. ठीक है, अरे कल देखेंगे, खैर हो गई, क्या मसला है. ठीक है. और दूसरी है ओवर थिंकिंग. सही है कि मैं अभी बैठा हूं आप लैपटॉप के सामने, एकदम से भी तो हो सकता है लैपटॉप उठ जाए, मेरे मुंह में गिर जाए, मैं मर जाऊं. ओ माय गॉड. सही है. तो मतलब ये दोनों जो चीजें हैं, ये किस तरह से कनेक्ट होती हैं, इनका क्या रोल है, ये हमारे साथ हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं, ये हमारे लिए मेंटल हेल्थ चैलेंज है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, या बस ये दूसरे चीजों की तरह एक नॉर्मल चीज है, इसको बस नॉर्मली डील किया जा सकता है. मुझे जरा इस पे इफ यू कुड शेड सम लाइट. Sure. I think anything that possesses as a problem is a problem for the client. Like अगर वो उसके लिए problem है तो वो उसके लिए problem है. चाहे वो level. I think it's important to understand कि mental health is on spectrum. It's not a category के बस label लगा दिया और बस jar में बंद कर दिया. It's a spectrum. So we all are on different spectrums, and we just move around. So that's important. I thought I'd clarify on that part. However, in terms of procrastination or those overthinking wali baat hai, of course that's something that could be worked on. It's part of the strategy work, right? Something that needs to be worked and redirected towards. There is this book called Maybe You Should Talk to Someone, and I'm a huge fan of it. I'm a raving fan of that book. It's written by a psychotherapist, and she seeks out for therapy for herself after some major life significant event in her life. And her therapist talks about this one story, and I'm going to end this answer with that part. So talks about what you're talking about reminded me of a cartoon. Like जहाँ पर एक बंदा is in the jail, they're trying to मतलब वो अपनी जंजीरें या जो भी था bars को हटाने की या निकलने की उससे इतनी कोशिश कर रहा है. Like they're banging against the bars, he's not able to get out. Only to realize जब वो right और अपने left पे देखता है तो वो खुला हुआ होता है. So the only bar is in front of him. And all he needs to do is walk around it. And that's what a mindset is, right? All we need to do is just to walk around it, because the solution, just remember, solution is everywhere except where the problem is. हर जगह solution होगा except what you think where the problem is. So where the problem is, there's not where the solution is. All we need to see is all we need to is shift, work on a mindset and shift, and the solution will be right there. Nobody is there to stop that individual from crossing their part. There are no guards, nothing at all. But क्या हम खुद के ही captive उसमें हो जाते हैं, like prison में, and there's nobody who's holding us accountable in that sense, like in sense of imprisonment. So I hope that answered your question. Thank you very much, Anusha. I would also like you to use this time to give your closing remark on this particular theme and the conversation. Maybe with one either of a message, either something that you would want people to take away, some exercise, or anything that you would want them to know of. Absolutely. I think one thing that I would want to say is whatever the listeners are going through, whatever you're going through, it is your reality. Right? I am not in a place, nobody is in the place to tell you that your pain is insignificant. So your reality is your reality, and that the pain threshold that हमने बात की थी, that's different for everybody. So what we do is हमें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, हमें तो नहीं होना चाहिए. So we don't validate our own emotions first. So please know that what you're going through, it's okay. The first is awareness. The second is what you want to do about it. Second is seek support. It could be from friends, family, people you trust. And then if you feel like I need some professional guidance, reach out to people and seek support.
people are there to support you. And so just make sure that you do that. So yeah, and validate your own self first before anybody else does that. Thank you very much, Anusha, for this amazing, wonderful remark towards the end. Ma'am Tayyiba, your closing remark, and again at the same time, any exercise, anything that you could maybe tell the viewers that if you are feeling some sort of whatever challenge it is, and it's not necessarily a challenge, maybe proactively, just one thing that could take maybe 5 minutes of a day, and if you keep doing it, you would feel better about it. If you could share that with us. वन थिंग इज के जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हम हमेशा सिर्फ जैसे एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब ये मसला हो गया है, आई एम फीलिंग दिस वे, या ये इशू हो गया, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब मैं कैसे सॉल्यूशन को सीख करूँ, तो ऑलवेज गो फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम है, फाइन, अब उसको ठीक करके तो यू वोंट गो एनीवेयर। ठीक है, उसके बारे में सोच के, उसके बारे में परेशान हो गए, तो ठीक है, प्रॉब्लम के साथ अब सॉल्यूशन की तरफ जाएं। ठीक है, थिंक अबाउट इट कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, क्या किया जा सकता है, किसके पास जाया जाए। ठीक है, और जहां पे आपको लगे कि ओके अब मेरे पास सॉल्यूशंस कम पड़ रहे हैं, या मुझे नहीं मिल पा रहा है, या मेरी वो कैपेसिटीज वो काम नहीं कर रही कि मैं कैसे उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करूं, सो गो फॉर द गो फॉर योर सोशल सपोर्ट, या फिर जो है अगर वहाँ पे भी हेल्प नहीं मिल रही तो या डेफिनेटली देयर आर प्रोफेशनल्स आउट देयर जो कि आपकी हेल्प करेंगे उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। ठीक है, और एज फॉर द एक्सरसाइजेस, द थिंग इज कि हम दुनिया के हर इंसान के लिए हमारे पास टाइम होता है सिवाय अपने आप के लिए। तो अगर हम वो 5 मिनट दिन के सिर्फ अपने साथ भी गुजार लें, ठीक है, अपने साथ भी बैठ के हम ये देखने का आज हमारा पूरा दिन कैसे गुजरा, व्हाट वी वेंट थ्रू, क्या क्या हमने किया, हैव वी डन एनीथिंग फॉर आवरसेल्फ। ठीक है, अपनी सेल्फ केयर के लिए हमने आज क्या किया, कितना टाइम निकाला है। हमने दूसरों का तो ख्याल किया होगा, दूसरों के साथ हमदर्दी भी की होगी, उनके मसले भी सुने होंगे, लेकिन अपने साथ हमने क्या किया है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इतना भी सोच लेंगे कि हमने अपनी सेल्फ केयर के लिए हमने क्या किया, तो आई थिंक विल गेट द आंसर कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए। वहीं से ठीक है प्रॉब्लम स्टैंड होती है, जहाँ पे हम अपनी केयर करना छोड़ देते हैं, ठीक है, वहीं पे हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो अपने लिए अगर हम सिर्फ 5 मिनट निकाल के ये सोच लें कि हमने आज पूरा दिन कैसे स्पेंड किया है, उसमें क्या इश्यूज हुए, हमने क्या उसके सॉल्यूशंस ढूंढे, नहीं ढूंढे, या हमने अपने लिए क्या किया, तो आई थिंक वहाँ से हमें आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि अब हमें आगे क्या करना है, अगला दिन कैसे प्लान आउट करना है। और वन थिंग इज दैट कि बेसिक सी चीज़ है, बट द थिंग इज कि ऑलवेज मैनेज योर रूटीन। ठीक है, अपनी रूटीन को मैनेज करें, अपने दिन का आप हर ब्लॉक को आपको पता होना चाहिए मैंने आज क्या करना है, वहीं पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स द बेसिक थिंग दैट वी नीड टू डू, और हम बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होते, जहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन आ जाती है। ठीक है, तो इफ अगर पीपल ये सब चीज़ें करने लगे कि रूटीन मैनेज कर ली, अपने दिन भर के प्लान आउट कर लिया कि अच्छा आज का दिन कैसे स्पेंड करना है, वहीं पे उनके बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। Thank you very much. What you just said makes so much sense, and I always say this because I was working with an on-training program with a corporate client, and वहाँ पे हम हमको यही बात समझाते थे कि हम ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें डेवलपमेंटल अप्रोच समझ ही नहीं आती। हमारे इस मुल्क के अंदर बड़ी से बड़ी मिल भी ना साल में 3 दिन कम से कम बंद होती है अपनी मेंटेनेंस के लिए, और ये जो फाइनेस्ट क्रिएशन है ना 6 फीट की, माशाल्लाह से ये पिछले 25 साल से चल रही है। 2 दिन भी बंद होकर इस पे कभी गौर फिक्र नहीं की गई कि इसके अंदर कुछ चीजों को ठीक करने की जरूरत है तो बंदा करे, लेट अलोन 5 minutes every day. So that's something that is the need of the time, and one should be taking it up. Last but not the least, ma'am Sana, I would like you to give your closing remark. But just one request, because मेरे पास एक बहुत बड़ा सवाल था. I don't want to open that up right now. But if you could, direct your closing remark towards one of this thought that हमारे यहाँ, seeking help, जिस तरह से अनुषा ने भी बात की, आपने भी बात की, मैम तैयबा ने भी बात की, हमारे ना हम आपस में एज इंडिविजुअल्स भी ना बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोफेशनल समझने लग जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, एक बंदा अगर कहता ना यार अजीब सा लग रहा है, तो मैं फौरन से ना अपने आप को काउंसलर बना लेता हूँ, बैठ को क्या मसला है बता मुझे, मैं भाई तेरा मौजूद है ना, तू बता कोई मसला नहीं। तो how good is this for me to be like this? Because at times I'll be very honest about it and I'll be very open about it. I've not been inviting people, but the nature of the work that I share, there are some people who just feel a level of comfort. They come up to me, and apparently I have also seen some similar experiences with few of my friends and colleagues, and they just opened up and shared the experiences, listening to which we are shocked that how are you even in the state that you are. Like, we could imagine something worse,
and you're just sharing it with us. What is it that you require? And that kind of confuses us, to which we direct them towards professionals. And that kind of brings me to this question that maybe I was the one who was able to direct it because I felt I could not do it because I'm not capable of doing it. It's a professional requirement. But there would be individuals who would be like, यार ये तो professional मसला नहीं, मैं भी हल कर सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं. So message to people who just turn out to be coaches, psychologists, counselors any day, any point in time, जो खुद से बन जाते हैं उनके लिए, और जो किसी को भी ये समझने लग जाते हैं उनके लिए, and your overall message towards the closing. Okay. Yeah, I totally agree with you because a lot of time this thing happens कि अगर हम अपना कोई मसला है लेके भी जाते हैं, लोग हमें खुद काउंसलर बन जाते हैं, थेरेपिस्ट बन जाते हैं, एंड उनकी सजेशंस होती हैं, यार ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे बड़ी चीज से गुजर रहा हूँ. तो इट हैपेंस ऑल्सो. और उनको वो फिर सजेशन जो होती हैं वो होती हैं कि नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़, नो डाउट जिनके रिलीजियस बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट स्टिल देयर आर सम इंटरवेंशंस विच आर नीडेड फॉर देम. सो बीइंग सपोर्टिव इट्स गुड. आप अपने फ्रेंड को सुनो, उनको समझो, लेकिन उनको सही डायरेक्शन पे आप उनको लेके जाओ, बिकॉज यू आर नॉट केपेबल, यू डोंट हैव दैट स्टडी, यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव दैट एक्सपोजर. तो it's better being supportive friends. You can listen them, but let them to go in a right direction. You can search for them because हमारे पास a lot of clients ऐसे भी आते हैं जिनके फ्रेंड्स ने हमसे अपॉइंटमेंट्स ली होती हैं, तो उनके दोस्त उनको सजेस्ट कर रहे होते हैं या उनके लिए खुद अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि दे शुड गो टू प्रोफेशनल्स, अदरवाइज उनको फिर बहुत ज़्यादा हार्म की, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो इतने केपेबल नहीं होते, तो वो एक वुंड जो होता है वो ओपन हो जाता है और वो हील नहीं हो पाता और वो इश्यूज सारे सरफेस लेवल पे आ जाते हैं. तो इट्स मोर डिस्टर्बिंग फॉर दोज हु आर सफरिंग. So it's better we shouldn't open that wound and we just guide them in a proper way. Okay, they can go to professionals in a way. I hope it clarifies your answer. Okay, yes, professional help is most important. And another my closing is like remarks are okay, you are important, you are worthy individual, do take care of yourself. It's most important. Like हम जितनी अपनी फिजिकल हेल्थ की टेक केयर करते हैं, इतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ जरूरी है. बिकॉज अगर हमें थोड़ा सा भी फ्लू भी हो जाता है, वी डू गो फॉर जोशांदा, कि हमें जोशांदा ले लें, या हमें कफ हो जाती है हम सिरप ले लें, या हम इस तरह से. तो अगर हमारी इरिटेबिलिटी है, एंगर है, हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा ये थोड़े थोड़े भी इश्यूज हैं, ये आखिर में बिल्टअप हो जाते हैं बहुत ज्यादा. तो इट्स बेटर कि हम माइल्ड लेवल पे हेल्प सीख कर लें और उन चीजों पे हम रेजोल्यूशन की तरफ जाएं कि ओके हम इन चीजों से गुजर रहे हैं, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ फ्रॉम देयर, रादर देन कि हम एक डायग्नोसिस पे पहुंचे और फिर हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की तरफ जाएं. तो क्योंकि अभी पाकिस्तान में इस तरह होता है कि लोग आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा जब they don't want to even get up from the bed, they do come for help. So rather than going to that stage, you can take step at initial symptoms level. So for individual, everyone is most important individual. So you deserve to be happy life, to be a happy and healthy life. So do take care of yourself, everyone. 100% right. Thank you very much. Anusha had to add something to it. Anusha, your closing remark or addition to this? Yeah, just an addition is regarding the unsolicited and the solicited advice, right? Sometimes हमें ज़रूरत नहीं होती advice, like we sharing it for the sake of sharing it. So as a piece, like what works and would really, like, do you want somebody to, like when your friend is sharing, ask them a question. Do you want somebody to listen or do you want an advice? Are you sure what is your need out here? Because sometimes they just want to rant and they'll feel okay. Advising wouldn't help here. So just ask them, hey, do you just want to share or do you want me to give an advice? I think that would really help. And I do that as in practice with my friends, even like my close friends, colleagues, वगैरह के साथ, and I ask them very candidly and they do the same. It feels like a safe space. So help them create that space within. Thank you very much, Anusha. I would really like you if you could share the details apparently of the community that you run for the Gen Zs,
So all the Gen Zs who are watching this could join you over there and become a part of that safe space that you have created for them to be open about such issues. Yeah, so we've started this Facebook community group called Gen Z Support Space, GENZ Support Space. So if you're between 10 to 25, you can join in. That's how it's happening. So we come up with themes every week on, like, for example, self-worth, goal setting, and all of it, and we bring in speakers from outside as live sessions. What we're also doing next week is we've started this free workshop for Gen Z and all those people who are related to the Gen Z world, to talk more about empathy with different generations and talk about what we can do to build healthier connections, to talk about Gen Z need, and also some insight into goal setting, because that's what a lot of Gen Zers need right now. It's like a direction, like where they can work on their goals themselves. So we do have some slots that are available. If you need details, I'll send it through Faizan. They'll post somewhere or the other. But yeah, that's also one thing that's coming up. So yeah, if you want to join the space, you just type in Gen Z support space and we'll be more than happy. Thank you There's very a much. psychologist, by the way, who's co-leading, just in case somebody questions I don't give mental health advices as such. So I have a psychologist on board. I have like consultants and everybody. And I do that as a coach, whatever is my capacity. So Thank you very much, अनुषा. अगर आपको नहीं मिले ना वो फेसबुक पेज, तो आप अनुषा को ढूंढ लीजिएगा. अनुषा आपको लाजमी मिल जाएंगी. और हम लोगों की माशाल्लाह जो सर्चिंग स्किल्स है ना बहुत अच्छी हैं. तो वैसे तो आपको ग्रुप ही मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर नाम मिले तो आप अनुषा को ढूंढ लीजिएगा. Thank you very much, Anusha. Thank you very much, ma'am Tayyeba. Thank you very much, ma'am Sana. Just last, because we are adding this Gen Z support group, I would also like if any of you could maybe talk about the Taskeen helpline, so that all those who are watching us, if they feel like doing it, they can maybe reach out to you. Anybody who's maybe not in the Gen Z and would like to be heard, they can call up on the Taskeen helpline. If any of you would like to go ahead. Okay. So Sarah, will you? Okay, sure. So if any of you feeling anger, anxiety, even though not anger, anxiety, these are the like diagnosis. अगर आप थोड़ा सा भी अपनी mental health में disturbance feel कर रही हैं, things which are other than normal, you can always approach us at Taskeen. You can contact us via Facebook, Instagram, WhatsApp, and our contact form. So you can always reach out to us and you can just drop a message. We can get back to you. We can set an appointment, and hopefully your life will become better. And thank you very much to you, beautiful ladies. It was really amazing having this conversation with you. Loved this entire conversation. Apparently something that was not an ordinary conversation, but something that was building on to what is already prevailing on mental health in the society. Really helpful to all those watching. If you are a part of the Gen Z, I would personally recommend you to be a part of this support group. If you are not, I'm so sorry. As of now, as हम request कर सकते हैं अनुषा से कि वो थोड़ा सा Gen Z से पीछे जाकर भी कुछ करे. But yet again, at the very same time, you have multiple organizations. One of such is Taskeen, जो आपके लिए readily available होती हैं. So if there's anything, just ring them up, talk to them. हम कहते हैं ना, कल भी हमने यही बात की थी. I'll be very honest. It's not just mental health. हमने जब कल ब्रेस्ट कैंसर पे भी बात की थी, तो a lot of people are not talking about it. So just कल भी डॉक्टर तारिक ने यही बात की थी कि बात करके क्लैरिटी लेके सुकून होकर फिर पीछे हट जाएं. That's better rather than just being in this zone के पता नहीं. So that's what I would say today, and repeat his answer and his recommendation to each one of you listening to us. Thank you very much. It was really amazing having you all. All those watching with us can go back to Pakistan versus New Zealand, and we hope Pakistan is performing well. I hope to see you three in person sometime soon, inshallah. Take care.